Yes, good morning, Ishwarya. Am I audible? Yes, ma'am. Okay, Ishwarya, as I already told you that from today onwards, we are going to start the intermediate level of Excel. Till now, you have covered the basic function of Excel that includes mathematical, statistical, text functions, and date functions, right? Yes, ma'am. And all these functions are going to use again in the upcoming tools and the options. But today's category matters a lot because this is called logical functions, एंड लॉजिकल फंक्शंस की ही बेसिस पर हमें आगे जाके कुछ रिपोर्टिंग करनी है या कुछ कस्टमाइजेशन करना है अकॉर्डिंग टू आवर ओन रिक्वायरमेंट्स, सो वो इसी फंक्शन के बेसिस पर ही होगा. Okay. सो लॉजिकल फंक्शंस के लिस्ट में वी डू हैव फोर फंक्शंस. द फर्स्ट वन इज इफ, second one is and, third one is or, and the fourth one is not. सो ये मेन फोर फॉर्मूलाज हैं जो इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं. सो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वन and it is if function. Okay. Actually, we have a database of employees in which their names are given, their departments are given, and their basic salaries are given. Now, if suppose your employer asks you to please calculate the DA of all the employees, if I say that will give 10% DA, 10% DA of basic salary to all the employees, then it is a simple calculation and you can do it like equals to basic salary into 10%. Right, Ishwarya? This is the basic calculation जिसमें मैंने आपको कैलकुलेशन के लिए कोई कंडीशन प्रोवाइड नहीं की है. Here I have given you the instruction to please calculate 10% DA. बट इन केस अगर इसी कैलकुलेशन के लिए अगर मैं आपको कोई टर्म्स एंड कंडीशंस दे दूं, देन यू विल अप्लाई लॉजिकल फंक्शन. सो यहाँ पर लॉजिकल फंक्शन का क्या रोल है कि इसमें हम अपनी कैलकुलेशंस को कंडीशन के बेसिस पर करते हैं. सो अभी आप देखो कि यहाँ इस डेटाबेस में आपके पास एम्प्लॉयज नेम है और उनके डिपार्टमेंट्स हैं, राइट. अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि हमें डिपार्टमेंट बेसिस पर यहाँ पर डीए अलॉट करना है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से कि हम अकाउंट्स डिपार्टमेंट को 50% डीए देंगे उनकी सैलरी का, एंड रिमेनिंग डिपार्टमेंट्स को विल गिव 30%. सो अब इस सिचुएशन में अगर आप कैलकुलेशन करोगे, सो ऑब्वियस सी बात है यू हैव टू लुक अप फॉर द अकाउंट्स डिपार्टमेंट, राइट ऐश्वर्य? Mm. एंड फॉर accounts department you will calculate 50% like this, and for the other departments you will calculate 30%. Okay. But here I have to look up manually that who belongs to accounts department and who is for the other department. Am I right? Right. अब अगर इस सिचुएशन में अगर मैं डेटा को फिल्टर भी कर दूं, लाइक अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाले एम्प्लॉयज अलग हो जाए, रिमेनिंग डिपार्टमेंट्स वाले एम्प्लॉयज अलग हो जाए, स्टिल आई नीड टू अप्लाई फॉर्मूला एटलीस्ट 2 times. एम आई राइट? अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लिए मुझे सेपरेट फॉर्मूला यूज करना होगा और अदर डिपार्टमेंट्स के लिए मुझे सेपरेट फॉर्मूला यूज करना होगा. तो यहाँ पर आपको डेटा सॉर्ट करने की नीड नहीं है, डेटा फिल्टर करने की नीड नहीं है. यू कैन सिंपली यूज अ लॉजिकल फंक्शन एंड इट इज इफ. इफ फंक्शन क्या करता है, आपके द्वारा दी गई कंडीशन को टेस्ट करता है और अगर वो कंडीशन मैच होती है देन उसके बेसिस पर वो आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट जनरेट करेगा, और अगर कंडीशन मैच नहीं होती है देन विल जनरेट एन अनदर रिजल्ट. सो हियर आई एम गोइंग टू ओपन द ब्रैकेट. नाउ फॉलो द सिंटेक्स.
The first one syntax is logical test. Now Excel is asking you what do you want to test. It means what's your condition. So यहाँ पर मेरी कंडीशन ये है ऐश्वर्या that I need to test कि यहाँ राज शर्मा का डिपार्टमेंट क्या है. So here I will select the department of Raj Sharma. और अब हमें ये टेस्ट करना है क्या ये डिपार्टमेंट अकाउंट्स है. तो अकाउंट्स है के लिए यू हैव टू अप्लाई हियर ऑपरेटर either equals to, greater than, less than, greater than, equals to, less than, equals to, or not equals to. Basically, there are 6 operator through which you can test any condition. Okay. Let me tell you about these operators first. You can use greater than, less than, greater than equals to, less than equals to, and in Excel, this would be the sign of not equal to. Okay. So there are 6 operator which we generally use to test any condition. So equals to, if, turn on bracket. So here Excel is asking for logical test. Aishwarya, remember one thing, यहाँ पर logical test matter करता है. अगर आप कंडीशन ही रॉन्ग अप्लाई कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो कैलकुलेशन होगी, जो रिजल्ट होगा वो भी रॉन्ग होगा. सो यहाँ पर आपको कंडीशन केयरफुली अप्लाई करनी है. So here I'm going to select the department of Raj Sharma. Now I'm going to test it either this department is account or not. So for accounts, I will apply here operator equals to. Now turn on inverted comma. आप कंडीशन टेस्ट करते समय अगर कोई भी टेक्स्ट खुद से लिखेंगे फॉर्मूला के अंदर, ऑलवेज रिमेंबर वो आपको डबल कोट्स के अंदर लिखना है. Okay. Now put comma. Now the second argument is value if true. Value if true here stands for Excel is saying कि अगर आपकी ये कंडीशन टेस्ट हो जाती है, मींस मैच हो जाती है, तो आप क्या वैल्यू देंगे, मींस व्हाट रिजल्ट यू वांट. सो अकाउंट्स वालों को हमें कितना डीए देना है, 50%. सो हियर आई विल give the value 50% multiply by salary. Now put comma here. Now it is asking value if false, and value false here कि अगर आपकी कंडीशन मैच नहीं होती है, अगर आपकी कंडीशन मैच नहीं होती है, then what would you do? Then I'll give 30%. इट मीन्स आप इस फॉर्मूला में ऐश्वर्या ये बता रहे हो कि अगर एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट अकाउंट है देन विल गिव 50% ऑफ सैलरी, और अगर नहीं है इट मीन्स आई एम टेलिंग यू अबाउट द अदरवाइज कंडीशन. अगर नहीं है देन विल गिव 30%. Yeah. नाउ प्रेस एंटर की. फॉर्मूला अप्लाई करते समय अगर आप टेक्स्ट से रिलेटेड कोई भी कंडीशन यूज करते हैं तो यहाँ पर स्पेलिंग मैटर करती है. इट डजेंट मैटर कि आप उसे स्मॉल में लिख रहे हैं या कैपिटल में लिख रहे हैं. Okay. नाउ But I think यस यस. I think you put it was accounts or it was account. Oh yes, they should be accounts. So look at here. Employees of accounts departments are getting 50% DA, and for other department there is a 30%. Same as for HRA, I'm going to give you a condition Okay. that the person who is getting salary above 20,000 will get 40% HRA. The person who is getting salary, About 20,000. yes, We'll get then will 40%. get 40% HRA, and remaining will get 10%. So equals to, Equals to if, turn on bracket. Now what we need to test here, that the salary of Raj Sharma is exceeding 20,000, and for exceeding you will use the operator of greater than. Okay. Every time किसी भी condition को आप test करोगे without these operators you can't test any condition. Put comma here, then what value will you give? Will give 40% of what? Of salary. And now it is asking value false, means if condition do not match, then what value you will give?
10%. 10% of what? 10% of salary. Now close the bracket. Now look at here. Even you can verify with one or two samples. Like यहाँ पर employee की salary 20 above है. So 40%. 40% of 30,000 is 12,000. So this is correct. Okay. ऐसा नहीं कि आंसर आ जाए और आप बिल्कुल हैप्पी हो जाओ. प्लीज वन और टू सैंपल से टेस्टिंग जरूर किया करो कि मेरा जो आंसर है वो सही आया है. क्योंकि मे भी हो सकता है कि मैंने ही इनपुट रॉन्ग डाला हो. तो अगर मैं इनपुट रॉन्ग डालूंगी तो आंसर भी तो रॉन्ग आएगा. सो आंसर आने के बाद आपको ये करना है वन और टू सैंपल लेकर टेस्टिंग करनी है कि आंसर राइट है या रॉन्ग है. सो अभी आपने ये जो फॉर्मूला देखा है इफ, अभी इसके थ्रू आप सिंगल ओनली वन कंडीशन टेस्ट कर रहे हो. व्हाट अबाउट द मल्टीपल कंडीशन? फॉर एग्जाम्पल इफ आई से अब हमें यहाँ पर कन्वींस अलाउंस देना है. अब कन्वींस अलाउंस में यहाँ पर मैं ये डिक्लेयर कर रही हूँ जो सेल्स डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज हैं उन्हें हम 10,000 का अलाउंस देंगे. जो R&D डिपार्टमेंट के अलाउंसेस हैं वो एम्प्लॉयज हैं विल गिव 7,000 एंड रिमेनिंग विल गिव 5,000. Okay. सो डिड यू गेट द क्वेश्चन कि सेल्स वालों को हमें 10,000 का अलाउंस देना है, R&D को 7,000 एंड अदर्स 5,000. तो अब मुझे यहाँ पर ये भी टेस्ट करना है who belongs to sales, who belongs to R&D. So for multiple testing, you will use nested if. Nested if के नाम से कोई separate formula नहीं है. It states that for each and every condition you have to apply if function again. So here, first of all, we are going to test first condition. So the Okay. logical test कि अगर राज शर्मा का डिपार्टमेंट सेल्स है equals to sales. Put comma here, then we'll give 10,000. नंबर का अगर आप कोई भी इनपुट दोगे ऐश्वर्या देन देयर इज नो रिक्वायर्ड ऑफ डबल कोट्स. डबल कोट्स इज ओनली रिक्वायर्ड फॉर टेक्स्ट. Okay. So this is our first condition. Now put comma and start if function again for the second condition. Now the logical test कि अगर राज शर्मा का डिपार्टमेंट R&D है, Mm-hmm. put comma, then what value will we give? 7,000. Similarly, अगर ऐसी कोई थर्ड कंडीशन टेस्ट करनी होती, you will again start if function. Otherwise, now it is asking for value false. Value false means अगर कोई पर्सन इन दोनों में से किसी भी कंडीशन में फॉल नहीं कर रहा है देन व्हाट वैल्यू यू विल गिव. अगर मैं कुछ भी मेंशन ना करूं देन यू मे राइट सिंपल जीरो. और अगर मैंने मेंशन किया लाइक आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि फॉर अदर डिपार्टमेंट विल गिव 5,000 देन यू मे राइट 5,000. Okay. सो अब इस फॉर्मूला में वी हैव यूज इफ फंक्शन टू टाइम्स, देन यू हैव Mm-hmm. टू क्लोज द ब्रैकेट टू टाइम्स. Okay. But we didn't give the conditions for the C2 sales. Wasn't that was the positive part of if, right? राइट. We'll also have to specify the negative part of it. यस. Let me tell you in a next example. So here is our conveyance allowance. Now we'll give medical allowance to the employees. अब इसमें हम ये कंडीशन बनाते हैं a person who do not belongs to accounts department will give medical allowance of rupees 15,000. So, अब यहाँ पर मैं कंडीशन को नेगेटिवली स्टेट कर रही हूँ कि अगर कोई भी पर्सन अकाउंट्स डिपार्टमेंट से बिलोंग नहीं करता है देन he or she will get 15,000. Just a minute. Sure. Sure.
Okay, fine. Let's continue. So जो एम्प्लॉय अकाउंट्स डिपार्टमेंट का नहीं है, he or she will get 15,000 allowance. अब इस कंडीशन को सॉल्व करने के लिए you have two option or two method. If we go with the simple one, so we'll start the formula with equals to if, right? Mm-hmm. Then we'll select the department of Raj Sharma. अब हमें ये देखना है कि राज शर्मा का डिपार्टमेंट अगर अकाउंट्स नहीं है एंड फॉर नहीं है के लिए हम यूज कर रहे हैं नॉट इक्वल्स टू साइन, then Okay. inverted commas on, accounts inverted comma close. Now put comma here. So now it is asking value of 2. It means अगर आपकी condition match होती है then what value will you give here? So we'll give 15,000. And for others में कौन है? यहाँ बात हो रही है अकाउंट्स वालों की. It means जो belong करते होंगे उन्हें क्या मिलेगा? So if you are paying some value then do right, otherwise you may write simple 0. Okay. So here who will get the allowance of 15,000? Each and every person except accounts department. So this is the first method. In the another one method, for another one method, we'll use here our next category, not. यहाँ हम ईश्वर है if के साथ not को कंबाइन करेंगे to states are negative condition. So हम यहाँ पर ये टेस्ट करेंगे अगर राज शर्मा का डिपार्टमेंट अकाउंट्स नहीं है, so you will combine the formula of not here. Okay. Turn on bracket, apply logical test. अब यहाँ पर not में हम एक ही टेस्टिंग कर सकते हैं. राज शर्मा का डिपार्टमेंट हमने सेलेक्ट कर लिया है. Now we'll close the bracket and equals to account. Put comma. Then what value will you give here? 15,000. Otherwise, 0. 0. Oh, sorry. There is a value error here. Just a moment. Yeah. Mm, So if not logical test, the C2 bracket close should be after the accounts, right? yeah, that's fine. So you are saying I have to apply here equals to accounts here. Yeah. Let me check this one. Sure, sure. If it will not work, then we'll apply. Same error. Yeah, fine. Okay. So here we will test our condition using not. Okay. So for the negative condition, you have two choice. Either you will use not equals to sign or either you will use not. Sorry. Not equals to and no. Yes, means for the negative condition, you may use a simple like in the previous example, I have told you that you can simple use a formula of if account department is not equals to accounts. Okay.
You will get the same result. So you have choice either to use not function with if or simple use not equals to sign. Oh, So हम इस कंडीशन को दोनों ही मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. Which one you will prefer? um, I think the first one. You will go with first one. Okay, but I will go with the second one. Yeah, second one The actually seems easier. yes. Now the next one here we need to calculate the special allowance. And for the special allowance, I'm going to give you the condition. Let us take an example. Like if I say कि जिन एम्प्लॉयज का डिपार्टमेंट अकाउंट है और जिनकी सैलरी 20,000 से अबव है will get special allowance of rupees 20,000. Listen one more time. If a person whose department is accounts and in the respective department if his salary exceeding 20,000 then he will get the special allowance of rupees 20,000. It means Ashwarya right now here to get the allowance of rupees 20,000 here we need to satisfy these two conditions. The first one condition is belongs to the department and the second one condition is belongs to their salary, Yeah, right? yeah, So here department should be accounts and basic salary should exceed 20,000. So yeah. जहां आपको एक साथ दी गई सभी कंडीशंस को मैच करना हो तो वहां पर हम लोग यूज करते हैं इफ के साथ एंड. So Okay. and function is used to test multiple conditions again. But and अगर आप यूज कर रहे हो it will state that you have to satisfy all the condition to get the true result. For example, equals to if turn on bracket. तो अब यहाँ मुझे का लॉजिकल टेस्ट करना है ऐश्वर्या. बट यहाँ मुझे टेस्टिंग जो है वो एक नहीं दो कंडीशन की करनी है. एंड देर इज नो चॉइस बिकॉज माई एम्प्लॉयर ऑलरेडी टोल्ड मी कि मैम विल गिव 20,000 special allowance to the person only whose department is accounts and in the same department if his salary exceeding 20,000. तो जहां पर आपको दी गई सभी कंडीशंस को मैच करना होगा तो वहां आप यूज करोगे एंड. लिखा ना चेक वेदर ऑल द आर्ग्यूमेंट्स आर ट्रू. नाउ Yes. टर्न Okay. ऑन ब्रैकेट. अब यहाँ पर लॉजिकल 1 है आर्ग्यूमेंट लॉजिकल 2 है डॉट 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 मींस एक्सेट्रा यू मे अप्लाई मैक्स मल्टीपल कंडीशंस हियर. मैक्सिमम लिमिट वैसे 256 होती है. So the first logical is the department of Raj Sharma should be accounts. Okay. Put comma here. And the second condition, the basic salary Basic of salary Raj Sharma should exceed 20,000. 20,000. And if there is third condition too, then put comma here and apply third condition. Otherwise, close the bracket of and here. Now put comma to continue your formula. Now Excel is asking value of 2. It means अगर आपकी condition satisfy हो जाती है, then what value you will give? So here we will give 20,000 allowance. Otherwise, 10,000. Now close the bracket here. Now we'll copy the formula. Now test here. Who is getting 20,000? Only the one person, Raj Sharma. अब यहाँ पर ये दोनों एम्प्लॉयज भी अकाउंट्स डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं ऐश्वर्या.
This one, Joseph and Akash. But their salary is not exceeding 20,000. Means they both are not satisfying these two conditions. That's why they are getting 10,000. और यहाँ अगर मैं इनकी सैलरी को चेंज कर दूं, like if I say Akash Patel is getting salary of rupees 35,000, then he will get 20,000 allowance. But ma'am, after using if, what if you want to use so and should be used between two positive two between two conditions, right? So Correct. if accounts if C2 equals to accounts bracket close and D2 greater than 20,000. So here we are using and to check that all the arguments are satisfying or not. Okay. So this is how we will use in every case. Right. Okay. Okay. और अगर मैं यहाँ पर सेम सिनारियो को चॉइस में कन्वर्ट कर दूं तो, like if I say the person whose department is accounts or the person whose salary is above 20,000 will get special allowance. अभी फिलहाल इस सिनारियो में मैंने मस्ट अप्लाई किया है, मींस ऑल द कंडीशन मस्ट गेट सेटिस्फाइड हियर. बट अब यहाँ मैं चॉइस क्रिएट कर रही हूँ. ओनली द वन कंडीशन शुड बी सेटिस्फाई हियर टू गेट अलाउंस ऑफ रुपीज 20,000. अब वहां पर हम यूज करते हैं इफ के साथ और where only one argument is satisfying. सो सेम यहाँ पर हम एग्जाम्पल बोनस के पर्सपेक्टिव से देखते हैं. इक्वल्स टू इफ टर्न ऑन ब्रैकेट लॉजिकल टेस्ट. अगर कंडीशंस में चॉइस है कि अगर आपकी कोई एक भी कंडीशन मैच हो जाती है देन यू विल गेट अलाउंस. सो द फर्स्ट वन कंडीशन इज कि अगर राज शर्मा का डिपार्टमेंट अकाउंट्स है, पुट कॉमा हियर, या राज शर्मा की बेसिक सैलरी 20,000 से अबव है. Now close the bracket. Now put comma here. Then what amount of bonus he will get. So here we will declare the bonus of rupees 50,000. Otherwise, 30,000. So what do you think? Raj Sharma will get 30 or 50? You will get 50,000. Yes. And what about the second one? Mm, 30,000. Next one. 30,000. And what about Joseph Patel? Uh, all of them 30,000. Both of them. 30,000. Confirm 30,000. Joseph will Mm, get 30,000. The employee number 6. Um, I mean the conditions were Here I have given you a choice that you need to fulfill only one condition here. या तो आपका डिपार्टमेंट अकाउंट्स हो या आपकी बेसिक सैलरी 20,000 से अबव हो. तो अगर आप इनमें से कोई भी um, एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हो देन यू विल गेट सैलरी ऑफ रुपीज सॉरी बोनस ऑफ रुपीज 50,000. सो हियर जोसेफ विल गेट 50,000 bonus. Look at here. yes, yes. Why? Because he is satisfying one condition. Right. Similarly, if I'm talking about Danish D'Souza, this one right now is getting 30,000. Why? Because he's not satisfying any of the condition. His department is HRM and his salary is also less than 20,000. So if I say that the basic salary of Danish is 26,000, then what do you think? He will get 30 or 50? Um, I think it was greater than 20,000. No? So, So he will get or 50,000. yeah, yeah.
So here you have to understand where should I use and function and where should I use or function. Could you explain me the or function written in the Yes, formula bar again? yes. Let us take a very simple example. Suppose here the employees' name are given and their IDs are given. Let us say these are the name of students. So यहाँ student name given है, इनकी IDs given है. ओके, सो यहाँ पर स्टूडेंट्स नेम है, उनकी आईडीज गिवन है और अब हमें यहाँ पर इन स्टूडेंट्स का एडमिशन स्टेटस फाइंड आउट करना है, लाइक हु विल गेट एडमिशन. सो यहाँ पर कंडीशन मेरी ये है, द स्टूडेंट्स हु इज होल्डिंग आधार और पेन, स्टूडेंट्स Mm-hmm. हु इज होल्डिंग आधार और पेन विल गेट एडमिशन, अदरवाइज नॉट. वो स्टूडेंट जिसके पास या तो आधार कार्ड है या जिसके पास पैन कार्ड है उससे एडमिशन मिलेगा, बाकियों को नहीं मिलेगा. सो यहाँ पर चॉइस है कि either you have Aadhaar, either you have PEN. So where there is a choice, then do apply the function of OR. Here, Yes. why we are starting the formula with if? Because if function is used to test your condition. And Yes. why we are combining here OR function? Because here we have given a choice. So now, logical one, कि अगर A के पास ID आधार है equals to आधार कुछ कॉमा, या फिर E के पास ID पैन कार्ड है, Okay. put comma here, now close the bracket, now put comma again, then what is the result? The result would be yes, he will get admission. Put comma, otherwise no. So basically we can say that only Aadhaar and PAN card ID is accepted. Okay. So Yeah. the first student will get admission, yes. Second one will also get admission. Yes. Third one, no. Mhm. Same as fourth one, no. Yes, Yes. yes, no, no. So this is Okay. the role of OR function here. Understood, ma'am. और यहाँ अगर मैं एक क्राइटेरिया और ऐड कर दूं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इन सभी स्टूडेंट्स के 12th के परसेंटेजेस गिवन है. Someone got 85%, someone got 60%, someone got 70%, someone got 45%. Now I'll say कि जिन स्टूडेंट्स के पास आधार आईडी है प्लस जिनके परसेंटेज 12th में above 70 है, they will get admission. So यहाँ admission उन्हीं students को मिलेगा who have Aadhaar ID and the percentage is above 70.
तो अब यहाँ पर हमें दोनों ही कंडीशन को, दोनों ही आर्ग्यूमेंट्स को फुलफिल करना है. So we'll apply here if function. if, yeah, and Now follow the logical one. The logical one states that student must have Aadhaar, Aadhaar. put comma, then logical 2. His percentage should be above 70%. 70%. And one more thing, if you are allowing admission for 70% too, then go with greater than equals to 70%. Fine. Okay. Mm. Now close the bracket, put comma. Then what value? 0. Yes. Here we need to declare only the who is getting admission or not. So go then do follow the status yes or no. यहाँ पे कोई Okay, फिगर okay. नहीं देनी है zero and all. We have to declare here status. Otherwise, no. Okay, okay. So here A is getting admission because he's fulfilling these two conditions. But the second one, no. No, Third one, no. Fourth one also no. no. Fifth one, yes. Yes. Sixth one, no. Similarly, the other one. No. इवन यहाँ पर अगर लास्ट स्टूडेंट की आई मीन एच की 98% भी होते, still he will not get admission because he do not have Aadhaar ID. Okay. Yes. So now for the next condition you will guide me. Okay. So here we need to calculate here traveling allowance of all the employees. And the condition is here, जो एम्प्लॉयज सेल्स या आर&डी डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, जो एम्प्लॉयज सेल्स या आर&डी डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, प्लस अगर उनकी बेसिक सैलरी 20,000 से अबव है, देन दे विल गेट ट्रैवलिंग अलाउंस ऑफ रुपीज 10,000. Basic salary, right? अंडरस्टैंड द कंडीशन फर्स्ट. हियर आई एम सेइंग जिन Eh, एम्प्लॉयज का डिपार्टमेंट सेल्स या आर&डी है, प्लस रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में ही अगर उनकी सैलरी 20,000 से अबव है, तब हम उन एम्प्लॉयज को 10,000 का ट्रैवलिंग अलाउंस देंगे. It means for traveling allowance, what conditions you need to satisfy here? The first one is the belong department. to department. Either you have sales department, either you have R&D department. And the second condition is related to the basic pay. It should exceed 20,000. Okay, now Hmm. try to test. Just a moment, I'm having water. Sure, sure. Um, so, Okay, yes. um, so we will start with equal to if Mm, and good. um, department. The first condition will be department equals Yes, to, for the first condition is related to department, right? But in yeah, department we have a choice.
Yeah, so we will use it as two separate logical arguments. The first one being department equal to sales, comma, second one equal to department equal to But the most importantly here is the first condition is uh, related to department, second is related to salary. That's why you are using here and. Am I right? mhm. And for the first condition of and, we have a choice. Then why are you not using Oh or here yes, again? or right. So, if the department of employee Uh, is account, sorry, sales. sales. Put comma here, and the department of employee is R&D. Fine. So this is the first condition. Now Mm, close the bracket of or here, put comma, and continue the logical function of end. okay, So our second condition is basic salary should exceed. 20,000. Close the bracket of and, put comma. Now value of 2, 10,000. And for other Um, would be 0. Or either you may give any other value. what exactly is 10,000? Exactly 10,000 is a figure which we are giving to the employees who are fulfilling these conditions. 10,000 is a traveling allowance. Okay, okay. Look at here, Raj Sharma is getting 0. Everyone is getting 0. The Mhm. reason being that, for example, like here Pawan Patil and the next employee, the department is R&D and sales, but their salary is not exceeding 20,000. So let's do one more editing here. Like if I say Pawan Patil is getting 22,500, so he will get 10,000. Right, okay. The same as for like other one, Divya Kumar. He belongs to R&D, but his salary is not exceeding. Right. Mm. So this is the logical function. Now for the total, you will simply apply here some function, Some, yeah. Basic plus DA plus HRA. right? All of Like these. this, Yeah, or just go with the shortcut alt equals to yeah. Alt plus, what is that? equals to. Sorry, alt equals to. For provident fund, like if I say I would calculate 12% of their basic salary, so there is no condition. You can simply calculate it 12%. Now, I'm going to give you the assignments of logical functions, and there would be four assignments. Okay, The more okay. and more and assignments you will follow, then you will get experience of all these functions here. But along with assignments, I'm going to give you a live question here. Do test it and will revert me when I will come back. I will when the next session we will have on Thursday. I can also get the scheduled on Wednesday because I have to go out of the town right now. Oh, okay. That's Okay, so we'll have session on the coming Thursday. I can schedule it on Wednesday, but we'll update you one day before. Okay. okay, ma'am. So what is the question here? Do you know about the text? About the text. Yes, text, Tax. Do you know Okay, about the tax? TAX. Do you know about the income tax? A certain percentage of your total income. Uh, do all the people pay at the same rate? At the same rate of tax? It depends upon their profession. No, it all depends upon their income. Yeah. गवर्नमेंट जो है वो आपसे आपकी इनकम के बेसिस पर टैक्स वसूलती है, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रोफेशन. और इनकम Yes. में हमारे स्लैब्स होते हैं. ओके. सो Mm. स्लैब्स में क्या होता है, डिफरेंट रेंजेस होती हैं. द पर्सन हु इज टोटल इनकम इज बिलो 2,50,000 और 4 lakh will have no tax. Then 4 to 8 lakh, then 5%, then 8 to 12 lakh. There's a 8%. There are different percentages.
सो अब आप एक ऐसी सैंपल फाइल रेडी करके रखना जिसमें डिफरेंट डिफरेंट एम्प्लॉयज नेम होंगे, उनकी Mhm. डिफरेंट डिफरेंट सैलरीज रेंजेस होंगी और उनका टैक्स कैलकुलेट होगा। Okay. एक ऐसी सैंपल फाइल आपको रेडी करके रखनी है एंड डू अप्लाई द फॉर्मूला कि वहां पर आप स्लैब की बेसिस पर टैक्स कैसे कैलकुलेट करोगे। Okay, ma'am. Okay, so Ishwarya, we are going to end session right now. Now next one session we will have on Thursday, but maybe on Wednesday I will confirm one day before. Okay, ma'am. Sure. Okay. Bye bye, thanks. Okay. Bye, ma'am. Take care.